Everyone, here for the class 10 exercise 5.2. Here let me solve the question number 30. How many 3-digit numbers are divisible by 7? So nothing is given to us, and this is the question of arithmetic progression AP. So here first we have to create an AP. Yani first 3-digit number is 100 and the last 3-digit number is 999. We got one range. Now we have to find, means यहाँ अभी AP create नहीं हुई है. Now we have to find which are divisible by 7 from. If is 100 is divisible by 7, so हम check करेंगे नहीं होगा. 101, 102, 103, 104, 105. So 105 पे पहुँचेंगे. Then we came to know that it is divisible by 7. So here we got our A. For our AP, our A is 105. अब उसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे, so we can create one AP because difference of 7 divisibles by 7 means 7 multiply हो रहे, multiple of 7 or divisible of 7 both are same. So here we will add 7 over there. So it is 112. So whatever we needed we have written. Now we have to find last digit. If 99 is divisible by 7, 998 is divisible by 7. 99 what? So 994 will divisible by 7. So here we have created our AP. So here let us write our A is 105. Difference as we are knowing that difference is of 7. And here our last term that is A and that is of 994. Now we have to find how many terms are there. मीन्स कितनी टर्म्स है ये पूरे 100 से लेकर 99 के बीच जो 7 से डिविजिबल है और शुरुआत हो रही है 105 से 994 तक. सो लेट अस राइट द इक्वेशन an is equals to a plus n minus 1 into d. In that an now we will write that is 994. What is our value of a? That is 105. n minus 1 that we are not knowing and difference we are knowing as 7. Let us take this side, so it will become minus and that will become. So let us subtract it. 994 minus 105 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 105. So what kind of answer we are getting? Let us check borrow. तो it will become 8 और यहाँ पे बच जाएगा वो होगा 9 8 and that 9 minus 1. So 889 I got. 889 I got and that is divisible by 7. Here will become n minus 1. अब हम 7 का टेबल चेक करेंगे. ठीक है कि 7 के टेबल में 88 कब आ रहा है, मीन्स वी हैव टू डिवाइड. सो यू हैव टू डू 889 डिविजिबल बाय 7. 7 1s are 7. Here I am taking 1 down, 8 down. 7 2s are 14, 4 down and that 9. 7 7s are 49. Means here if we are reducing it with 127, that is equal to n minus 1. So what is the value of n? That will become 127 plus 1 means 128. यानी कि 7 से डिविजिबल होने वाले how many numbers are there? 128 numbers are there which can divisible by 7. So here this is the concept of this thing. I hope you understood that what kind of question they have given. Now the next question is similar to it. In that question what they have asked that मल्टीपल ऑफ 4. तो वहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस होगी. लेट मी डू दी सेकेंड क्वेश्चन. एज हियर यू कैन सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? मीन्स आवर रेंज दे हैव गिवन एज 10 to 250 and we have to write multiples of 4. If they are asking divisible by 4, then also multiples of 4 we are writing. यानी 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स. तो क्या 10 4 के टेबल में आ रहा है? So we will say no. 11 is coming. We will say no. If yes, 12 is coming in the table of 4 or 12 is divisible 4. Both are same. So here we will say that first digit that will be of our AP that will be 12. Now we have to add 4 so it will become, let us add 4 over here, so it will become 16. Now we having last digit that 250. तो उसे 4 से डिविजिबल करके देखते हैं क्या उससे डिविजिबल हो रहा है. सो ये नहीं होगा. देन वी आर डिवाइडिंग 249 by 4, सो वो भी नहीं होगा. सो लास्ट व्हाट विल कम 248 विल बी द नंबर दैट इज divisible by 4. मीन्स वी क्रिएटेड आर AP in that our an is equals to
48, our a is equals to 12 and our difference that is the table of 4, so difference 4 का होगा. So अभी हमें पता करना है कि कितने नंबर्स होंगे जो 10 से 250 के बीच है, यानी 12, 16 and so many. So how many numbers that we are not knowing? So here we are finding an, that is equals to a plus n minus 1 into d. On the place of an we will write 248, a is 12, n minus 1 we are not knowing, d we are knowing as 4. Let us take that 12 this side and here it is n minus 1 into 4, so it will become 6 and 4 minus 1, that it will become 3 and 26 and that is equals to n minus 1. Let us take that 4 down in division and let us divide 236 by 4. So let us do it. So 6 4s are and 5 4s are. Let us do 20. So 3 will remain over here. So we are making it at 36. So 9s are. So 59, that is equals to n minus 1. So n is equal 60. So 60 numbers are present over there from 10 to 250, जो किससे डिविजिबल है 4 से, या किसके मल्टीपल है 4 की. So this is the concept of it. I hope you understood. Here you can see, if you skip this, watch it over there, that it is 59 and if I am reducing it, we are getting n is equals to 60. On the board, let me read the question. यहाँ पे दे दिया है, for what value of n are the nth term of 2 AP are equal. So हमें क्या करना है, हमें इसका an और हमें इसका an कंपेयर करना है, यानी ऐसा कौन सा n का वैल्यू होगा जब ये दोनों AP का आंसर सेम आ रहा है. So here what we will do, let us watch it over here. So here we have a as 63. Let us find difference, that is 65 minus 63. So difference we are getting of 2. यहाँ मुझे a मिल गया है, मुझे d मिल गया है. अब हमें दोनों का an कंपेयर करना है, वो मैं बाद में कर रही हूँ. फर्स्ट लेट मी राइट a of this and difference of this, that is 10 minus 3. So difference we are getting as 7. So here when we are comparing an of this and an of this, what we will get? So watch it over here. So let me write the equation. an is equal to a plus n minus 1 into d, यानी हमें n ढूंढना है और यहाँ पे a plus n minus 1 into d वापस से हम रखेंगे क्योंकि हमें दोनों के लिए इक्वल लाना है. कौन सी टर्म जो होगी वो दोनों में इक्वल आएगी, यानी जब ये कम होता जाए, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो ऐसी एक जगह होगी, ऐसी एक कोई टर्म होगी जब दोनों की सेम होगी. तो वो हम ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सी वाली टर्म है जो सेम होगी, यानी n क्या होगा जो दोनों के लिए सेम है. सो लेट अस राइट हियर आई विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a as 63 and minus 1 I am not knowing, difference I am knowing as 2. Here I will substitute 3 and minus 1 I am not knowing, difference is of 7. Let us solve it. हम ऐसा सॉल्व करेंगे कि हमें n का वैल्यू मिल जाए. ठीक है, तो here 63. So let me write somewhere over here whatever I got. Let me write somewhere over here. So I am writing over here. So here is 63 and minus 1. तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे. If you are multiplying 2, so what it will become? It will become plus 2 and minus 2, and that will become 3 plus 7 and minus 7. So let us solve 63 minus 2. So it will become 61 plus 2n. एंड 7 में से 3 माइनस होगा, -4 बचेगा और बचेगा 7. सारे नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं और n को एक साइड. इफ आई एम टेकिंग 7 इन दिस साइड, सो इट विल बिकम माइनस, एंड इफ आई एम टेकिंग 61 दिस साइड, इट विल ऑल्सो बिकम माइनस. सो यहाँ पे बच जाएगा जो होगा 5n और यहाँ पे हो जाएगा -65. माइनस 3 विल कट आउट. 65 डिवाइड बाई 5, सो वी आर गेटिंग 13. सो यहाँ पे 13th टर्म जो होगी इस AP की वो भी वही होगी और इसकी भी 13th टर्म का आंसर वही होगा. इफ यू वांट टू रीचेक व्हाट यू कैन डू, हियर सेपरेटली यू कैन फाइंड A13 फॉर दिस, एंड इन दैट A you will write this 63 plus 12 into D you will write that 2 if you are solving this, and separately you will find A13 for that, but in that A you will take as 3 and 7, तो दोनों का आंसर सेम आएगा. So this is the concept behind it. So here I have found, you just have to write it. As you can see over there, that is the question number 16. Determine the AP. हमें AP ढूंढना है whose third term, यानी A3 is given as 16 and the 7th term means A7 exceed the 5th term, यानी 5th term से 12 ज़्यादा है, तो उसकी हमें AP ढूंढना है. मीन्स वी हैव टू क्रिएट एन AP. तो AP बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें A पता होना चाहिए और हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता है तो हम उसे एक्सीड कर सकते हैं. So how we will solve it? So here what we can do,
हियर वी कैन राइट दैट A3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग ओवर हियर. सो A3 हम लिख सकते हैं a plus 2d and that is equals to 16. Let me keep it as it is. If it is useful, I will use. If it is not useful, then we will see that what will happen. And here a7 is equals to a5 plus 12. So what we can write? a7 को हम a plus 6d लिख सकते हैं और इसको a plus 4d plus 12. a कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे 6d minus 4d होगा. Let us take all the d को एक साइड ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2d that is equals to 12. और अगर हम आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं so that is 12 divided by 2. So d का वैल्यू जो हमें मिल रहा है d we are getting as 6. d हमें 6 मिल रहा है. सो अभी मुझे डिफरेंस मिल गया, फिर भी हमारी एपी क्रिएट नहीं हुई है. सो लेट अस राइट ओवर है दैट सब्स्टिट्यूट value of d. So if I am keeping, so it will become 2 into d 6 आएगा और ये 16 होगा. So 6 2s are 12 that is equals to 16. So is equals to 16 minus 12. अगर हम 16 minus 12 कर रहे हैं so हमारा आंसर आ रहा है वो है 4. So here if we got our a and d, let me create ap over there. मैं ap create करूँगी. So let me write ap somewhere over here. So हमारा जो ap यानी हमारा आंसर है वो होगा 4. उसमें हम डिफरेंस 6 6 यानी 6 6 ऐड करते जाएंगे. सो 4 plus 6 it will become 10 and then it will become 16 and so on. So here whatever they have asked, we have completed their task, that we have found AP by using A and D and by solving these both equations.